गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल ईयर का आपके पेपर 4 में टॉपिक चल रहा था डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का आपको डेफिनेशन मीनिंग बता दी थी और कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि कैपेबल होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर एक बारी और आपको बता दें कि कौन से जो बैक्टीरिया हैं वह कैपेबल होते हैं। तो लगभग 80 स्पीसी जो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन के कैपेबल होते हैं, जिसमें से कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हैं। एज ऑफ 2014 अबाउट 18 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया वर known to be capable of transformation, about evenly divided between gram positive and gram negative bacteria. The number might be an overestimate since several of the reports are supported by single papers. Naturally competent bacteria carry set of genes that provide the protein machinery to bring DNA across the cell membranes. The transport of the exogenous DNA into the cell may require proteins that are involved in the assembly of type 4 pili and type 2 secretion system, as well as DNA translocase complex at the cytoplasmic membrane. Due to the difference in structure of the cell envelope between gram positive and gram negative bacteria, there are some difference in the mechanism of DNA uptake in these cells. However, most of them share common features that involve related proteins. The DNA first bind to the surface of the competent cells on the DNA receptor and passes through the cytoplasmic membrane. जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उससे डीएनए ट्रांसफ़र किया जाता है। डीएनए मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से डीएनए ट्रांसलोकेज किया जाता है। ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पास थ्रू द अदर स्ट्रैंड बीइंग डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियस इन द प्रोसेस। जो न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनमें जो डीएनए को डिग्रेड करने की कैपेसिटी होती है। तो कुछ डीएनए ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होते हैं या ट्रांसलोकेज हो सकते हैं। कुछ डीएनए ही ट्रांसलोकेज हो सकते हैं। द ट्रांसलोकेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए may then be integrated into the bacterial chromosome by a RAC-A dependent process। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसलोकेज हो गया है, इंटीग्रेट करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, जिस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया गया है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इंटीग्रेट करेगा रेक ए डिपेंडेंट प्रोसेस के द्वारा। इन ग्राम नेगेटिव सेल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन the DNA required the presence of channel formed by secretion on the outer membrane. Pillin may be required for competence, but its role is uncertain. The uptake of DNA is generally non-sequence specific, although in some species the presence of specific DNA uptake sequence may facilitate efficient DNA uptake. नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया आर्टिफिशियल टाइप से ट्रांसफॉर्म डीएनए का कैसे किया जाए। देन नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन is a bacterial adaptation for DNA transfer that depends
on the expression of numerous bacterial genes whose products appear to be responsible for this process. In general, transformation is a complex energy requiring developmental प्रोसेस. जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स जटिल एनर्जी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंटल प्रोसेस है इन ऑर्डर फॉर ए बैक्टीरियम टू बाइंड टेकअप एंड रिकम्बाइन एक्जोजीनस डीएनए इनटू इट्स क्रोमोसोम. जो बैक्टीरिया होता है जिसका डीएनए ट्रांसफॉर्म होना होता है, पहले वह बैक्टीरिया से बाइंड करता है एंड उसके एक्जोजीनस डीएनए से रिकम्बाइन करता है और उसके जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ इंटीग्रेट करता है. इट मस्ट बिकम कॉम्पिटेंट दैट इट एंटर ए स्पेशल फिजियोलॉजिकल स्टेट. Competence development in Bacillus subtilis requires expression of about 40 genes. The DNA integrated into the host chromosome is usually, but with rare exception, derived from another bacterium of the same species and is thus homologous to the resident chromosome. नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है बैसिलस सबटिलस. इन बैसिलस सबटिलस द लेंथ ऑफ ट्रांसफर डीएनए इज greater than 1271 kilobase, more than 1 million base. The length transferred is likely double-stranded DNA is often more than a third of the total chromosome length of 4215 kilobase. It appears that about 7 to 9% of the recipient cell take up an entire chromosome. The capacity for natural transformation appears to occur in a number of prokaryotic and thus far 67 prokaryotic species in 7 different phyla are known to undergo this process. Competence for transformation is typically induced by high cell density and or nutritional limitation conditions associated with the stationary phase of bacterial growth. Transformation in Haemophilus influenza occur most efficiently at the end of exponential growth as bacterial growth approaches stationary phases. Transformation in Streptococcus mutant as well as in many other streptococci occur at high cell density and associated with biofilm formation. Competence in Bacillus subtilis is induced toward the end of logarithmic growth, especially under conditions of amino acid limitations. Similarly, in Micrococcus luteus, a representative of less well-studied actinobacteria phyla, competence develops during the mild late exponential growth phase and is also triggered by amino acid starvation. By releasing intact host and plasmid DNA, certain bacteriophages are thought to contribute to transformation. नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एज एन अडेप्टेशन फॉर डीएनए रिपेयर. जो डीएनए डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करना भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही होता है. कॉम्पिटेंस इज स्पेशली इंड्यूस्ड बाय डीएनए डैमेजिंग कंडीशन. फॉर इंस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन इज इंड्यूस्ड इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई by the DNA damaging agent mitosine C. A DNA cross-linking agent. Mitosine C is a DNA cross-linking agent and fluoroquinolone topoisomerase inhibitor that
cause double-strand breaks. In Bacillus subtilis, transformation is increased by UV light and DNA damaging agent. In Heliobacter pylori, ciprofloxacin, which interact with DNA gyrase and introduce double-strand breaks, induced expression of competence genes, thus enhancing the frequency of transformation using Legionella pneumophila, uh, Carpenter et al. Tested 64 toxic molecules to determine which of these induce competence. Of these, only 6 all DNA damage agents cause strong induction. These DNA damaging agents were mitosine C, which causes DNA interstrand cross-link, norfloxacin, ofloxacin, and nalidixic acid inhibitor of DNA gyrase that cause double-stranded breaks. By Bicyclomycin causes single and double strand breaks, and hydroxyurea induced DNA base oxidation causes UV light also induced competence in Lactobacillus pneumophila. Charpentier et al. Suggested that competence for transformation probably evolved as a DNA damage response. Logarithmic growing bacteria differ from stationary phase bacteria with respect to the number of genome copies present in the cell, and this has implication for the capability of carry out an important DNA repair process. During long rhythmic growth, two or more copies of DNA या any particular region of the chromosome may be present in bacterial cell as well. Division is not precisely matched with chromosome replication. The process of homologous recombinational repair is a key DNA repair process that is especially effective for repairing double-stranded damage such as double-strand breaks. This process depends on a second homologous chromosome in addition to the damaged chromosome. During logarithmic growth, a DNA damage is one chromosome may be repaired by a HRR using sequence information from the other homologous chromosome. Once cell approach stationary phase, however, they typically have just one copy of the chromosome, and HRR homologous recombination repair required input of homologous template from outside of the cell by transformation.